So this is the question number 3 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question you have been given a tuple which is named as tup1, and it has some values 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and it has been asked what will be the output of the this particular print function. तो print function के अंदर it has been asked कि what will be the output of tup1 3 is to 7 is to 2. So this is a case of slicing. In order to answer these kind of question, first of all you should be aware what is slicing and with which data type we can apply slicing to. ओके, तो अगर पाइथन की बात करूं तो पाइथन के अंदर स्लाइसिंग इज बेसिकली यूज टू गेट सम और होल पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस डाटा टाइप. तो सीक्वेंस डाटा टाइप की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से सीक्वेंस डाटा टाइप है? तो वी हैव लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल. दीज आर योर आवर सीक्वेंस डाटा टाइप. ओके, so we can apply slicing to these three data types list, string and tuple. Now let's see what is the syntax. तो syntax क्या होगा बेसिकली कि जो भी वेरिएबल ये सीक्वेंस डाटा टाइप जिसके अंदर आपने वैल्यू असाइन करी है, दोस वेरिएबल कैन बी यूज्ड एज, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर क्या है tub1, तो सो tub1 कैन बी यूज्ड एज अ सीक्वेंस डाटा वेरिएबल. And start, stop and step, these are basically three different variables. All of these three are values are optional in nature. अगर इनकी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी गई है तो इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इट वुड बी स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस डाटा टाइप, एंड ऑफ द सीक्वेंस डाटा टाइप एंड स्टेप वैल्यू वुड बी +1. तो इट विल डिपेंड, अगर स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस डाटा टाइप. अगर स्टेप वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट वन, एंड इट विल बी द इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू होगी दैट विल बिकम योर लास्ट वैल्यू. इन केस अगर आपका स्टेप वैल्यू क्या है? नेगेटिव. इन केस कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो उस केस में क्या रहेगा? स्टार्ट वुड बी 0, स्टॉप वुड बी द लास्ट एलिमेंट एंड स्टेप वुड बी द +1. ओके, तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर स्लाइसिंग वर्क. तो स्लाइसिंग के केस में क्या होगा? वैल्यू विल गो फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1. याद रखिएगा, इट विल गो फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1, and as per the step value we will be skipping some of the values or we may be considering each and every value. Okay, so for an example अगर हमारी कोई string है s equals to hello world, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू इंडेक्स दिस पर्टिकुलर डाटा टाइप. तो जो भी हमारा डाटा टाइप है उसकी हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी. इफ यू सी hello h is coming under index 0, e at 1, and similarly at the last element would be d, and d which comes on index 10. Okay, so for an example what will be the output of this slicing? तो s क्या है मेरा? s will be sequence data type variable in this case which is string. ठीक है, तो s क्या है मेरा? sequence data type variable which is string in our case, and start value क्या हो गई इसकी? 2, यानी index from 2 से कहां तक जाएगी? 7 - 1 यानी 6 तक, और step value कितनी है आपकी? 2. तो what will be the value? It will go from 2 to 4 because it will skip 3 because of the step value. अगर यहाँ step value +1 होती it will go from 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6. But since its step value is 2, in this case it will go from 2 to 4 and 4 to 6. So in this case output would be L, O and W, because it will this particular question of slicing will consider only 3 elements which is at present set index number 2, index 4 and index 6. So output of this slicing would be low. Now coming back to our question, अगर मैं हमारे क्वेश्चन की इंडेक्सिंग करूं तो at index 0 we will have 10 and index 8 we will have 90. Okay, now question is you need to give 3 is to 7 is to 2, यानी कि it will start from indexing 3, it will go till 6. Why? 7 minus 1, and index value would be 2. तो step value क्या है आपकी? 2. तो it will go from 3 to 5. Since after 5 it cannot go to 7, तो we will have only 2 elements. कौन कौन से elements रहेंगे टपल के अंदर? स्लाइसिंग की वजह से 40 and 60. तो this will be our 2 elements. So slicing of these elements will result into its new tuple which is considered of element 40, 60. A fun fact to remember है, स्लाइसिंग जब आप किसी डाटा टाइप के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो एग्जिस्टिंग टपल के या एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं करता. इट विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग और न्यू टपल, ओके, और न्यू लिस्ट एज पर से ऑफ एनी सीक्वेंस डाटा टाइप. सो option number D is correct. If you wish you can apply this question to your Python IDE and you can get the result as well, just to cross check.
So if you apply this one to particular IDE, you will see tab 1 of 3 is to 7 is to is giving you 60. Okay, I hope you understood the concept of slicing in Python. Okay, so there is a question for your practice. You have been given a string s equals to welcome, and you've been asked what will be the output of this particular slicing. You need to remember no stop value has been given. Since it is a positive value, stop value would be the last element of the string. So this question has been asked from CBSE midterm, and you need to give the answer in comment box. As usual, you need to answer in comment box and also provide the reason why the particular value or why the particular option is correct. Okay guys, that's it for today. I hope you learned something new.